Hello, everybody. Hello, dear students. How are you? Hope you're wonderfully well at home. पढ़ाई कर रहे हैं ना? I know you are doing a lot of study. I guess you should be. But अगर कहीं पे भी lag behind हो रहा है तो again I remind you, please start your studying. Things are uncertain at this time, but yet you have to keep doing your work. ठीक है, you cannot depend on anything else except studies. ठीक है, so we start a new lecture on biology today again, and that is the continuation of the chapter we had started last time. That was what? That was the process of reproduction, how organisms reproduce, and we had discussed the definition of reproduction. We had also discussed about the types of reproduction, that was asexual and sexual reproduction. Now in today's lecture we are going to study about the types of asexual reproduction. Okay, so the basic lecture today is a type of asexual reproduction. और ये वाला जो लेक्चर है, ये वाला जो पोर्शन अपन पढ़ रहे हैं, ये आपके 2 मार्क क्वेश्चंस जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर इज ऑलवेज 1 क्वेश्चन of 2 marks from this portion, always. If not always, 95 to 96% there is a question on this portion in your objective section. So please pay attention to the figures, to the diagrams and to the examples कि कौन से organism में किस type का reproductive process होता है. ठीक है, so let's start. Excuse me. Let's start our lecture on types of asexual reproduction. Now, as you know, we had defined asexual reproduction as a type of reproduction in which there is no formation of gametes as well as there is no fusion of gametes. That means there is no fertilization and it involves a single parent, and the organism resulting or the offspring is an exact copy of the parent. That was asexual reproduction. Now generally this type of reproduction is seen in lower organisms. Lower organisms like in amoeba, that is protozoans. Protozoans are always the unicellular organisms, eukaryotic organisms, right? Protista group. In bacteria, so the lower organisms, in fungus, in algae, in the plants also. Algae is one type of plant, but basically the lower forms of life which do not have a very complex body design exhibit this kind of reproduction. So first let us see the types of asexual reproduction. In it, first is fission. The word fission, you must be aware of the word. What does it mean? Fission means breaking. Fusion means combining or joining, and fission means breaking. So this is the first type of asexual reproduction which we are going to study, and in it there are 2 types of fission. One is binary fission. Binary fission. Second is multiple fission. Binary fission, it involves this word bi. Bi means 2. So when an organism can break into 2 parts or can break into many parts. If it breaks into 2 parts, it is termed as binary fission. If it breaks into many parts, it is termed as multiple fission. So binary fission, let's first discuss. This bi means 2. The organism
divides to form, to give two daughter cells, or you can say organism, or you can say the parent cell divides to give two daughter cells. और इसका एग्जाम्पल है अमीबा. अमीबा में this kind of reproduction is seen and it is also exhibited by certain bacteria. ठीक है. अब ये कैसे होता है इस पे ध्यान देना. फिगर जो मैं डायग्राम बना रही हूँ उस पे ध्यान देना, बिकॉज इट इज आस्क्ड अगेन एंड अगेन कि जैसे आपको 1 2 3 4 डायग्राम्स दे दिए, उसके बाद आपको 1 or 2 parts are given first and second and the sequence is changed, and then you have to arrange the sequence or something or the other is asked from this. So just pay attention how it happens. You know, amoeba is a protozoan and it has a irregular shape. It is a gel-like, doll-like structure. It has an irregular shape. First, what happens is, in this amoeba, the nucleus starts elongating and there is division of the nucleus first. What happens? The nucleus starts to divide. We can say there is beginning of division of nucleus, and a term which is describing the division of nucleus is karyokinesis. ठीक है. Karyo word related to nucleus, kinesis means division. So first there is karyokinesis, or I can say first there is the division of the nucleus. This is nucleus, cell membrane, cytoplasm. This is division of nucleus. उसके बाद the nuclei divide into two and there is formation of structure like this. ठीक है. This, there is a groove which develops like this, and then ultimately there is the formation of two cells. ठीक है. So here a groove starts developing and the nucleus is totally divided. First it was one, then it started dividing. It divides into two. Along with that, a groove starts developing in the cytoplasm, and then there is division of the cytoplasm into two. And to this step we refer to as cytokinesis. Cyto, division of the cell. So this is the whole process which is seen in binary fission in amoeba. And as you know, one organism divided to give two organisms. So it is termed as binary fission. इसका example amoeba हो सकता है, euglena हो सकता है. It can be like this way also. The division can be like this also, this way. Nucleus अगर इस तरह से, for example, I have drawn it this way. अगर U elongate होता, then the division would be like this. So two cells would be formed. So it can be seen the both ways. Okay. So this is about amoeba. How amoeba, euglena, protozoans, they reproduce by this method. See, Plasmodium also is a protozoan, but उसमें binary fission नहीं देखा जाता, उसमें multiple fission देखा जाता. तो इसके example जब भी आप लिखो, it would be amoeba, euglena, paramecium, etc. This way. अब एक चीज और आपको बताऊं, that is just for your knowledge sake. You don't need to write it in your answers at any point. But sometimes amoeba generally exhibits binary fission. But sometimes जब उसको survival या existence का doubt लगता है, बहुत stressful conditions होता है, तो वो multiple fission भी करता है. ठीक है? So, but you have to write binary fission. That was just for your information. So this is one, binary fission. Second is multiple fission. Multiple, as the word suggests. What does multiple fission mean? As the word suggests, multiple fission means breaking of an organism into many different parts. Breaking of an organism into many different parts.
is termed as multiple fission. You please write it. An organism divides to give many daughter cells. That is called multiple fission. And इसका example है Plasmodium. What is Plasmodium? Just reminding, it is the organism or the pathogen for malaria, organism which causes malaria. ठीक है, तो उसमें कैसे देखा जाता है? For example, if this was Plasmodium, there is a structure called cyst like this. उसका cell है, nucleus है. First what happens? This is the cell, this is the nucleus. First what happens? The nucleus divides into many small parts inside the cyst, and a bit of cytoplasm comes around each part like this. Can you see? So first karyokinesis results into many small nuclei like this. Understood? Then what happens? They stay inside the cyst. Now then what happens? These nuclei move towards the periphery of the cell, periphery boundary. They move at one side like this. All of them move here, and then lastly there is a breakage of this membrane because they push across it, and they are all released like this. And so from one cell, what was like this? So from one cell, lots of daughter cells were formed. So this is how multiple fission takes place. An example of multiple fission which is given in your book as well is Plasmodium. पूछ सकते हैं ये, ध्यान देना. So this is multiple fission. These are the division is one type, a sexual type of reproduction which is fission. उसके दो types है, binary and multiple fission. ठीक है? Okay. Now the second type of asexual reproduction is called budding. Now this word comes from the word bud. Bud means, आप जानते हैं, छोटा सा structure which is formed on the surface of a bud of a flower. Flower is first a bud and then it, तो bud एक छोटा सा structure के लिए word use होता है. Here it is being used for a process of reproduction. Budding में क्या होता है? There is a small part from the parent body. A small part emerges out and it stays with the parent till it requires nutrition and support, and then it just detaches from the parent and grows as a whole individual. अब fission में आपने देखा था कि parent ही divide करके, so original parent is not there, parent itself gives two daughter cells, but in this both organisms, the parent also survive and the bud also survive, both live as a new organisms. तो budding में इसका एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दे रखा है दैट इज हाइड्रा ईस्ट. नाउ बडिंग में आपको बता दूं, आपकी बुक में सिर्फ हाइड्रा एंड ईस्ट का एग्जाम्पल दे रखा है एंड इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड related to them only, that is exogenous budding. Budding is actually of two types, exogenous budding and endogenous budding. You know the word exogenous means out and endo means inside. So you can write examples of budding to be hydra and yeast, who actually they are examples of exogenous budding. For example, hydra आप जानते हैं is what? It belongs to which group? I'm just reminding. It is Coelenterata. So this, if this was the hydra, somewhat like this. These are the tentacles. Tentacles were a feature of the Coelenterata group. ठीक है? What happens is a small bud starts developing here. A small hydra, you can say, starts developing here from this parent body. And this hydra
इसमें ये होता है इट रिमेन्स विथ द पेरेंट टिल इट रिक्वायर्स न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट. फूड जो अपने आप नहीं ले सकता जब तक ये, और सपोर्ट के लिए भी, बिकॉज इट वुड बी वेरी स्मॉल. सो इफ दिस हाइड्रा इज एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, वो ड्रिफ्ट अवे हो जाएगा. तो टिल इट कैन सर्वाइव ऑन इट्स ओन, it stays with the parent. Then what happens that it detaches from the parent body. Please excuse the little differences in this detaches here, and this itself stays as a new organism. This then will form new and live its own life. This will live its own life. So these two organisms are from the same one parent. Parent gives rise to new organism. इसमें ये question ध्यान रखना है. Till when does the bud stay with the parent? It stays with the parent till it requires nutrition and support, and both survive after this. So this is exogenous budding. ऐसे ही ईस्ट में देखा जाता है. This is hydra. अगर मैं ईस्ट का एग्जाम्पल आपको बताऊं, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसिया जो इसका साइंटिफिक नेम है. इफ दिस वाज ईस्ट, सडन देयर वुड बी अ बड फॉर्म लाइक दिस. समटाइम्स दे डोंट इवन डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. फिर समटाइम्स दे मे डिटैच एंड लिव एज देयर ओन, समटाइम्स ग्रो ऑन द पेरेंट बॉडी. सो दिस इज ऑन द सरफेस. एक्सोजिनस में पेरेंट की बॉडी के सरफेस पे बड डेवलप होता है. ठीक है. एंडोजिनस में क्या होता है, इनसाइड द बॉडी डेवलप होता है, एंड देन स्लोली इट विल ग्रो इनसाइड एंड देन कम टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी इन सम वे. एंड एंडोजिनस बडिंग के एग्जांपल्स होते हैं स्पॉन्जेस. ठीक है, पोरिफेरा, दे शो एंडोजिनस टाइप ऑफ बडिंग, बट दिस हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी. तो आपको ये दोनों ध्यान रखना. ठीक है. सो दिस इज बडिंग. Second type of asexual reproduction. Coming to the third type of asexual reproduction, that is fragmentation. What do we mean by fragmentation? The word, what is it suggesting? Fragment means a small piece. Fragmentation is seen in organisms like Spirogyra. और उसमें क्या होता है, if the parent accidentally divides into two parts, both these parts will grow into new organisms. वैसे ही जैसे प्लानेरिया में भी, आपकी बुक में थोड़ा सा कंफ्यूजन है. If I get time right now today, I'll explain about difference between fragmentation and regeneration, और next lecture में बताऊंगी. That might confuse you a little bit, but don't worry, I would explain you how to find out the difference. Like fragmentation में क्या होता है, for example, इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा, एंड अ होल स्पाइरोगाइरा इज अ टाइप ऑफ फिलामेंटस एल्गी. फिलामेंट की तरह इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है. फिलामेंटस एल्गी होता है लाइक दिस, एंड बाय चांस इफ दिस would divide into two, this also would divide into a new Spirogyra, and this also would divide into and form a new organism. ठीक है. तो both the parts, both the fragments would divide into two parts, and both will grow individually. From one there was formation of two. I just showed you the division. So both will survive and grow into new parts. One kind of regeneration only, regenerative ability, but इसमें ये है कि both the parts which have been separated will grow into new individuals. वैसा ही एग्जाम्पल आपको एक आगे जाके दिया हुआ है रीजनरेशन में, वो है प्लानेरिया. बट प्लानेरिया में भी आप फ्रैगमेंटेशन बता सकते हैं. दिस इज एन एल्गी. प्लानेरिया इज अ फ्लैट वर्म, platyhelminth, a structure like this. अगर ये कट हो जाता है तीन पार्ट्स में, तो ये तीनों पार्ट्स विल ग्रो इनटू अ न्यू बॉडी. सो यू कैन राइट इवन planaria shows fragmentation, but in your book it has been mentioned in regeneration, लेकिन आप लिख सकते हैं wouldn't be wrong. ठीक है. regeneration में थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगी. so this is
when a organism has the ability to divide to grow into new organisms if they have been cut, any body part has been detached, they will grow into new organisms. This is fragmentation. ठीक है, सीन इन स्पाइरोगाइरा, आपकी बुक में स्पाइरोगाइरा ही एग्जाम्पल दे रखा है, लेकिन आगे चल के रीजनरेशन वाले टाइप में प्लानेरिया मेंशन्ड है, दैट आल्सो कैन बी गिवन हियर. ओके, नाउ स्टडिंग द फोर्थ टाइप ऑफ asexual reproduction is spore formation, formation of spores. और इसके एग्जाम्पल है राइजोपस जो आपकी बुक में दे रखा है, ब्रेड मोल्ड. सो दिस इज अ फंगाई, सो दिस इज जनरली सीन इन फंगस. अगर अपन फंगस की स्ट्रक्चर देखें तो दे हैव स्ट्रक्चर्स लाइक दिस. इनका अगर a structure like these branches hyphae बोलते हैं इसको. This is the sporangium. Actually in fungus a structure like this is formed, and in this structure the nucleus will divide into, these branches are called hyphae. अगर आपके पास main body is called mycelium, these branches which keep it attached to the सबस्ट्रेटम. जैसे ये ब्रेड मोल्ड है तो ब्रेड के ऊपर जो उसको अटैच रखेंगे उनको हाइफे बोलते हैं, HYPHAE. These would keep it attached to the substratum. A structure like this divides, और इसमें सेम वैसे जैसे अपन ने पढ़ा था अबाउट मल्टीपल फिजन, द न्यूक्लियस divides into many parts and cytoplasm comes around it, and these structures are formed which are called spores. ये इसके अंदर बन गए, इनको क्या बोलते हैं, spores. So various spores are formed and then they will come here and they would be separated out like this. Or they would be released out. But एक अब आप सोचोगे what is the difference between this and multiple fission. ये ध्यान रखना है, these spores stay inside the sporangium till they get favorable condition like moisture and temperature. For example, अगर आप ब्रेड को बाहर रख देते हैं बहुत दिनों तक तो वहाँ पे मॉइस्चर और टेम्परेचर उसको प्रॉपर, अगर मोल्ड ग्रो करता है तो उसको प्रॉपर मिलेगा तो रैपिडली ग्रो करेगा. लेकिन जब आप रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो उसके बिगड़ने के कम चांसेस होते हैं, मोल्ड के आने के कम चांसेस है. सो दैट उसको वाई डजंट इट ग्रो इन द रेफ्रिजरेटर, क्योंकि वहाँ पे स्पोर्स रिलीज नहीं होते बिकॉज द टेम्परेचर इज नॉट परफेक्ट. सो इन दिस द स्पोर्स रिमेन इनसाइड द स्पोरेंजियम. दीज आर स्पोर्स. They remain inside the sporangium till they get favorable condition like proper moisture and proper temperature. When they get it, they will be released and it will grow. So this kind of reproduction, asexual reproduction, is seen in fungi. और उसका example दे रखा है Rhizopus. Rhizopus is a fungi, bread mold. राइजोबियम वॉज द बैक्टीरिया, कईयों को वो ध्यान आ रहा होगा, लेकिन राइजोबियम बैक्टीरिया था जो नोड्यूल्स ऑफ रूट्स में रहता था ना, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में. कैसे याद रखना है, राइजोबियम बी बीच में है, बियम बी फॉर बैक्टीरिया, राइजोबियम. कभी भी ये वर्ड समझना है कि ये बैक्टीरिया है या फंगस है, कभी भूल जाते हैं राइजोपस एंड राइजोबियम. आई हैव seen hundreds of times, I've seen students getting confused. So one thing only, just see there's no B in this, no bacteria, so that means it's a fungus. ठीक है? So I just want to give you a hint so that you never forget it. So this is clear, spore formation. Okay. Now the fifth type of reproduction is regeneration, and as the word is suggesting, this is regeneration मतलब वापस ग्रो करना, वापस जनरेट होना. तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑन लाइफ विच हैव द एबिलिटी टू रीजनरेट.
ग्रो इनटू न्यू, जैसे मैंने प्लानेरिया का आपको एग्जांपल दिया आपकी बुक में, वो यहाँ पे दे रखा है, प्लानेरिया रीजनरेट्स टू गिव अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो वो इसका एग्जांपल है। मैं जो आपको परफेक्टली बताना चाह रही हूँ, इसका एक और एग्जांपल है स्टारफिश। स्टारफिश, और यू कैन से एस्टीरियस, यू नो इट वाज एकाइनोडर्माटा। तो स्टारफिश इज अ एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आपकी बुक में प्लेनेरिया दे रखा है, बट दैट कंफ्यूजेस कि पूरा प्लेनेरिया भी तो पूरा ऑर्गेनिज्म में बन रहा है, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, वो आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। रीजनरेशन में क्या होता है, कई बार तो पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जैसे एक ऑर्गेनिज्म के 2-3 टुकड़े हो गए तो सारे ग्रो कर गए, जैसे प्लेनेरिया। लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपेंस, regeneration is not a reproductive process totally, there is regeneration of a particular part of organism. For example, the tail of a lizard, अगर कट जाती है तो it regenerates, it grows again. So that time we cannot say it is we cannot say it's a type of reproduction, because reproduction में तो नया organism बनता है, वो tail will not grow into a new lizard, right? So that time it is regeneration of a part. So let's see the example of a starfish. For example, if this was a starfish and it lost this arm, ये arm separate हो गया, ठीक है? So let's see this. Now what will happen, this starfish will slowly develop a new arm like this, but this arm would be डिस्कार्डेड। तो आप कहोगे ये तो इसने रीजनरेट किया बट सिर्फ एक पार्ट किया, तो दिस इज नॉट रिप्रोडक्शन। सो यू कैन राइट रीजनरेशन इज नॉट ऑलवेज अ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। लेकिन अब ये क्यों होता है ऐसा, आई जस्ट टेल यू, दिस आर्म वाज कट फ्रॉम हियर। अब मान लो ये आर्म यूं कट होता है, लाइक इट इज कट लाइक दिस, a little bit of central portion also goes with it like this, ठीक है? तो this obviously will develop a new arm, but this also will grow into a whole new starfish. अब ये क्यों हुआ, what was the difference? उसमें the arm was cut from here and यहाँ पे बीच में से कट हुआ, it took some cells from the middle along with it. This explains very clearly what is regeneration, why it occurred here, इसमें क्यों पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस कह सकते हैं इसमें, because in an organism there are certain specialized regenerative cells, only they have the ability to regenerate. तो पहले केस में मैंने आपको बताया था it was cut from here, the regenerative cells might be here. So when it got cut from here, regenerative cells ने आर्म तो बना दिया था, लेकिन that arm did not become a whole starfish. लेकिन सेकेंड केस में मैंने आपको बताया it was cut from middle, तो मिडल में से थोड़े regenerative cells भी साथ गए थे, उस वक्त पूरा starfish बन गया था, right? So that shows that regeneration is a process in which there are some specialized regenerative cells which are required for a whole organism to grow. ठीक है? और स्पाइरो फॉर एग्जाम्पल फ्रेगमेंटेशन में द होल ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड इन सच अ वे कि वो दोनों नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे, ठीक है? सो दैट इज रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। होप दिस इज क्लियर। ये वाला रीजनरेशन का स्टारफिश वाला एग्जाम्पल इट वॉज आस्क्ड लास्ट ईयर इन NSEJS एग्जामिनेशन, ठीक है? सो ऐसे ही दे रखा था हाउ मेनी स्टारफिशेस वुड बी देयर एंड देयर वर लॉट्स ऑफ डायग्राम, तो आपको ये ध्यान देना है कहाँ से कट हुआ है। सो दैट वाज रीजनरेशन एंड दीज वर द 5 टाइप्स ऑफ asexual reproduction which have been given in your books. These always example आपको याद करना है, what are the examples? जैसे रीजनरेशन में प्लानेरिया दे रखा है, फ्रेगमेंटेशन में स्पाइरोकाइरा, यू कैन राइट प्लानेरिया फॉर बोथ, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ठीक है? फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। स्पोर फॉर्मेशन में फंगाई दे रखा है, बाइनरी फिशन में अमीबा, बैक्टीरिया,
मल्टीपल में प्लाज्मोडियम, बडिंग में हाइड्रा एंड ईस्ट दे रखा है, ठीक है। सो एक चीज ध्यान रखना, इन regeneration also there is example of hydra given, that bud forms from the regenerative cells only. तो एक बार एनसीईआरटी ठीक से पढ़ना, ठीक है। सो होप दिस इज क्लियर टू यू about the types of asexual reproduction. So in this lecture we cover this. In the next lecture we would be covering about asexual reproduction in plants, and here I would like to point out that when we are talking about plants, instead of using the word asexual reproduction, we use the word vegetative propagation. So it is similar to asexual reproduction which is seen in animals, but generally we use the word vegetative propagation. Vegetative part of a plant is the non-reproductive part, ठीक है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगी, तब तक आप इन पे ध्यान दीजिए, इस पोर्शन को पढ़िए एंड ट्राई टू मेमोराइज द डायग्राम्स एंड एग्जाम्पल्स, ठीक है, सो दैट यू कैन गेट 2 marks एनी टाइम एनीवेयर इजीली, ठीक है। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, please make proper notes and study well. Take care of yourself. Okay? So in this lecture itna hi. Next time ke liye let's wait for the portion on vegetative propagation. Till then, take care. Thank you.